Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss the second method of the simultaneous equations, that is substitution method. You can see on the board. जी बगैर टाइम वक्त रखिए फौरन स्टार्ट करते अपना मेथड। क्या है इस मेथड में, यहाँ के सामने पहले एग्जांपल शो कर रहा हूँ. Again we will do some examples and in the last I'll give you some homework. अच्छा जी, पहली हमारी एग्जांपल ये कहती है कि 2x minus 3y is equals to 13 और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या रही है जी, 3x plus y is equals to 3. अच्छा जी, अब इस मेथड के लिए आपने कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, आपकी मर्जी, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो. एक बार फॉर दिस पर्पस वी label them. This is equation number 1 and this is equation number 2. ये हमने लेबल कर दिया. नाउ अब हमारी मर्जी है, चाहे हम इक्वेशन 1 को यूज करें चाहे हम इक्वेशन 2 से स्टार्ट करें, ये हमारी चॉइस है. सपोज आई डिसाइडेड टू यूज इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 अब मेरे पास फिर दो ऑप्शंस हैं, ईदर आई गो फॉर द x और फॉर y. यानी या तो मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा या मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये भी मेरी चॉइस है. चलिए जी, हमने डिसाइड किया हम x को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो फ्रॉम 1 यानी कि पहली इक्वेशन में से हम सब्जेक्ट बना रहे हैं x. कैसे, आइए देखते हैं. तो x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि 3y को हमने राइट पे शिफ्ट करा. x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब इस 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे और ये कन्वर्ट होके वहां जाके डिवाइड करेगा एंड दिस इज योर न्यू फॉर्मेट. इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 3 फॉर आवर रेफरेंस, ताकि बाद में हमारे रेफरेंस में काम आ जाए. नाउ अब क्या करें. नाउ दिस value of x in terms of y is going to be substituted into the equation number 2. Be careful. So in equation 2 अब मैं equation number 2 में substitute करने लगा उसको. So 3 times, draw a bracket, 13 plus 3y over 2 plus y is equal to 3. आप देख सकते हैं I substituted x, the whole thing of x here. Now अब इसको सॉल्व करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे. You can see in the whole equation there is no x, only y left. So this is the equation for y. Get the value of y. क्या करेंगे आइए देखते हैं. This 3 will multiply the numerator, that makes 39 plus 9y upon 2. Similarly, I shifted this y to my right and this becomes negative. अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा. This 2 will go there and multiply this term, that is called cross multiplication. So 39 plus 9y is equals to 2 times 3 minus y. Let's open the brackets. So 39 plus 9y, this is 6 and this is 2y. I'm going to shift this 2y to my left and 39 to the right. So 9y plus 2y is equal to 6 minus 39. As you can see, the signs are going to be changed. 2y becomes positive and 39 becomes negative. The two terms are going to be added. It becomes 11y and the two terms are going to be subtracted. The sum will be minus 33, sign of the greater number. I need y. I'm going to remove this 11. 11 will go there and divide the 33. So minus 33 will divide it by 11. This will give you the value of y as minus 3. But still, I need x. For the value of x, again we have three options. Either I substitute here,
or either I substitute here. If I substitute in this equation, that is more convenient because it's already arranged. Just substitute and get the value of x. ये हमने 3 में substitute कर दिया. तो 13 plus 3 times minus 3 upon 2. So 13 minus 9 upon 2. 13 में से 9 minus करेंगे 4 left. And 4 divided by 2 will give you the value of x, that is 2. These are the two required values of x and y. They ask you to solve the simultaneous equation with the help of the substitution method. Okay, ji, let's move on to the second example. Okay, ji. Let's move on to the second example. Example number 2. X plus 4y is equals to 24, and I labeled it as equation number 1. 2y is equals to 3x plus 5, and I labeled it as equation number 2. Again, I'm going to use one of the equation and make a subject. So I'm going to use equation number 2. लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करा है और यहां से हम सब्जेक्ट बना रहे हैं y को. जैसे हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 is going to divide 3x plus y, and you can see y as subject, and I labeled as equation number 3. अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हम 2 से लेकर चले तो 1 में रखेंगे. लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया y की जगह पे. कैसे, आइए देखते हैं. So x plus 4 times, draw a bracket. So 3x plus 5 upon 2 is equals to 24. As you can see, 2 times 1, 2 times 2. I'm going to open the bracket. This is 6x plus 10, and this is 24. The two terms of x are going to be added. That becomes 7x and 24 minus 10. So 7x equals to 14. This 7 will go there and divide 14. So 14 divided by 7. This gives you the value of x as 2. But we need y as well. Again, there is a possibility. Either I substitute this value of x in 1, in 2, or in 3. So I'm going to substitute in 3. So y is equals to 3 times 2 plus 5 over 2. So y, this is 11 over 2. Now this 11 over 2 is itself, it's a correct answer. But if you want, you can express it as in decimal, 5.5. If you want to simplify further, you can write it as well. All three methods are correct. This is the value of y.
this solution of x and y can be expressed, solution of x y can be expressed in this round bracket as well. And remember, in the round bracket we always write in the first position the value of x without any doubt, and then we write the value of y. Any format you want to use, all are correct. This is the solution or the answer of x and y after solving the equation with the help of substitution method. नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े. Okay ji, let's move on to the third example. Three x plus 2y is equal to 7. I'm labeling it with question number 1. X minus 3y is equal to 17, and I will label it as equation number 2. Again, I have to make subject from any of the equation. Now I'm using equation number 1. So from equation number 1, I'm going to make x as subject. So 3x is equals to 7 minus 2y. 3 will divide there. 7 minus 2y over 3. This is your third equation. Now this value of x will be substituted into equation number 2. Okay. I'm going to substitute in equation number 2. You can see this x. This thing is going to be replaced by x. 7 minus 2y over 3 minus 3y is equals to 17. As you can see, we found fractions. We have a negative sign, means we are going to take LCM. The 7 minus 2y minus 9y. As you can see, there is 1 in the denominator, therefore we multiplied it. Now, this 3 will go there and multiply 17. On the other hand, these two y are going to be added because the signs are same. So 7 minus 11y is equal to 51. We need the value of y. We need the value of y. And what we are going to do, I shifted this 7 to my right and it becomes negative. चलिए अब 51 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 44. So minus 11y is equals to 44. Sign of the greater number. This minus 11 is multiplying with y, goes there and divide 44. So 44 divided by minus 11. And the value of y will be negative 4. But I need x as well. So what I do, I'm going to substitute this value of y into 3. Let's see how it works. चलिए अब आइए देखें क्या रिजल्ट्स निकलते हैं. And you can see minus minus plus, this is 8. 2 times 4, 8. So 7 plus 8 makes 15. So 15 divided by 3. If I divide, the result will be
5. This is the value of x and y जो आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा था with the help of substitution method. फाइनली इसको नोट कर लीजिए ताकि अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े. एग्जाम्पल नंबर 4. Okay, I'm going to clear the board. Let's move on to example number 4. The first equation says 4y is equal to 3x. And the second equation says x plus 2y is equals to 21. This is equation number 1 and this is equation number 2. So I make subject from one of the equation. So I'm moving on to the equation number 2. From 2 I'm going to make y as subject. So 2y is equal to 21 minus x. So y will be 21 minus x upon 2. This is the value of x, y. This is our third equation. Now this equation is going to be substituted in the equation number 1. क्योंकि हमने equation number 2 से ये ड्राइव किया तो अभी 1 में चला जाएगा. आइए देखते हैं ये 1 में क्या रिजल्ट बनता है. मैं y की जगह पे रख रहा हूँ इस. तो 4 times 21 minus x upon 2. Now you can see the 2 and 4 are going to be cancelled each other. 2 left. Let's open the bracket. 42 minus 2x is equal to 3x. Minus 2x minus 3x is equals to minus 42. अच्छा जी, आप देख सकते हैं on my left the two signs are same. It's going to be added. This is 5x. This is negative 42. Minus 5 will go there and divide the whole equation. अच्छा जी, अब देखते हैं हम क्या रिजल्ट बनता है. तो ये x is equals to minus 42 over minus 5. Signs are going to be cancelled. 5 के टेबल में 42 नहीं आता. इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. दिल चाहे तो डेसिमल में दे दीजिए, otherwise no. I'm going to substitute this value into equation number 3, 2 and 1 in any one wherever I want. ओके जी, मैं इसको 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. y is equals to 21 minus 42 over 5 and this is 2. अब जरा भी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कई फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई हैं. तो just look at the numerator only, don't look at the denominator too. We are taking the LCM 5 times 21 is 105. LCM लिया हमने, ये 42 हो जाएगा. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं भी क्या रिजल्ट बनता है. उसके बाद फिर हमने अपना काम मुकम्मल करना है. सरकार ये बन जाता है 63. 63 upon 5 upon 2. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते आ रहा है, कोई बात नहीं जी,
y is equal to 63/5 multiplied by 1/2। अच्छा भाई ये क्या कर रहा हूं? अगर आपने वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड के बाद वाला नंबर हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है। Therefore, your final answer will be 63/10. These are the values of y and x. What they asked you. आपने नोट किया उन्होंने कैलकुलेशन को काफी टफ कर दिया था आपकी। अच्छा जी, हम बढ़ते हैं आज की लास्ट एग्जाम्पल पे, फिर उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है होमवर्क को कंप्लीट किया जाए। बहरहाल, मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल। Example number 5. 3x plus 4y is equal to 17, and I label it as equation number 1. 2x minus 5y is equals to 19, and I mark it as equation number 2. जिस प्रकार I am making x subject from 1. Let's see how it works. 17 minus 4y upon 3. This is the way I make x as subject from equation number 1. I'm going to substitute this value of x into equation number 2. So 2, I draw a bracket, 17 minus 4y over 3 minus 5y is equals to 19. Now, I open the bracket, this 2 will multiply the numerator, so 34 minus 8y over 3, 19 plus 5y. I shifted this 5y to my right. Let's cross multiply. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 19 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 जो है मल्टीप्लाई करेगा 5 को, तो 34 minus 8y, this is 57, and this is 15y. 3 multiply 19, 3 multiply by 5. Now I gather y to my left, numbers to my right. This is minus 8y minus 15y. This is 57 and this is 34. अब आप देख सकते हैं टू द लेफ्ट नंबर्स साइन सेम है, लिहाजा सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा minus 23y. राइट पे देख रहे हैं साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड द आंसर इज 23. This 23 will go there and divide. So minus 23. मैं ये लाइन दोबारा लिख रहा हूँ ताकि जिन लोगों को कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा भाई। This 23 will go there and divide the 23. So 23 divided by minus 23. So the value of y is minus 1. Now substitute this value of y in equation number 3 so that we can have the value of x. Now you can see minus minus plus. 17 plus 4, that is 21. 21 divided by 3. And 3 divided by 21 makes 7. So the value of x will be 7. And you can see the value of x
and y. This is what they ask you to find the value of x and y with the help of substitution method. Kindly note कर लीजिए, फिर मैं आपसे होमवर्क शेयर करूंगा और फिर अपने क्लास को एंड करूंगा. राइट, जल्दी से अपना होमवर्क नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी. I hope आप लोग नोट कर चुके. एग्जाम्पल नंबर 5, I'm going to clear the board and I'm writing down the homework. Okay जी, I'm clearing the board. Question number 1. 4x plus 3y is equal to 11. 2x minus 5y is equals to 25. Question number 1. 2x plus 3y is equal to 0. X plus 4y is equals to minus 15. This is question number 2. Let's move on to the third one. It says 2x minus y is equals to 6 and 4x plus 3y is equals to minus 3. The fourth one, 4x minus 3y is equals to 14. 2x plus y is equals to minus 13. It's minus 3. Last but not the least, question number 5. 3x plus 4y is equals to 3. 2x minus y is equals to 13. This is the 5 simultaneous questions for simultaneous equation, and use them and use substitution method to solve the question. Thank you very much students. Nice to meet you. इंशाअल्लाह ताला अपने चैनल पे दोबारा मुलाकात रहेगी. इसी तरीके से हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए. इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं अपलोड करता रहूंगा और होमवर्क जरूर किया कीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेसेस. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. नाइस टू मीट यू. अल्लाह हाफिज.